Namaskar, I am Madhuri Shukla. I welcome you all on behalf of Uday India Digital to have yet another informative interaction on health sciences. Today, it is our privilege to have with us Dr. Smita Joshi, joining us directly from New Jersey. She is an Indian residing in USA and a director of Smith Medical and Heart Hospital, Gujarat. Welcome to the show, Dr. Joshi. I would like to enlighten our viewers that she is a social influencer in the field of diabetes who, with her sister, has executed a never done before 7,500-kilometer self driven car drive campaign from Kashmir to Kanyakumari in India and from San Francisco to Atlanta in USA. So she has been doing this to create awareness on juvenile diabetes, which is also referred to as type 1 diabetes in children. Dr. Joshi, please enlighten our viewers that we all know that diabetes has become a well-known common disease in modern lifestyle. Everyone's familiar with diabetes. So, how is it different in children? Yeah. First of all, Madhuri, it's been my pleasure to connect with India like this way from USA. So my heartiest pranam to all viewers of Thank you. India. Right. Yeah. Yeah. Madhuri, we know all about diabetes. Always, but in terms of diabetes, so always we talk about the type 2 diabetes, always. Mm-hmm. वन मोर थिंग, पहले डायबिटीज के बारे में जानने से पहले मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि this year is the 2022, right? And Right. before 100 years, in 1922, there was a one child, a 14 years old child, suffering from diabetes in Canada hospital, and one injection was given to him. That was the first therapeutic dose of the insulin injection. Means Okay. this is the 100th anniversary year of the medical science greatest discovery, insulin Right. discovery, because Right. in the world 537 million people are suffering from diabetes and taking the life saving insulin they are lived on, right? So True. juvenile diabetes, the child is responsible for the invention of the insulin. And unfortunately, in India, type 1 diabetes term is regarding this very extremely lack of awareness. Oh. Type 1 diabetes means in childhood, there is any autoimmune disease or any external environmental factors, suddenly pancreas of the child stopping the insulin production. And Okay. what insulin is doing in our body? So insulin is a hormone, and what we are eating and making the blood sugar in that our food is converting into sugar, blood sugar. Yes. That Yes. insulin hormone is converting this blood sugar to the energy to the each and every cell of our body. So, Right. yeah. So see, if pancreas is not producing insulin type 1 child, then rising of the blood sugar in the blood of the child, and each and every cell of the body of the child is suffering due to lack of energy. So Okay. every system is affected. Right. Yeah, right, exactly. So, and one more positive thing also. Okay, if these type 1 diabetes children are supporting from outside insulin in the form of insulin injections, particularly what as per child's requirement, then child lives normal life as another kids. Okay. So Yeah, they can go with routine activities. yeah, So exactly. so so Dr. Joshi is telling us that diabetes are of two types. One Yeah, is type 1 yeah, and one is type 2. yeah, And what as a common man we know is that type 2 diabetes is what we know in adults. So yeah, this is very eye-opening that children can also suffer from diabetes, and that kind of diabetes is type 1, yeah, and this is something which is right in them from the beginning, from birth. yeah, That's correct, right? yeah, And this is yeah. because the body is not producing insulin Yeah, properly. exactly. But since birth also, or maybe in childhood, suddenly at the age of 2 Okay. years, at the age of 5 years, at the age of 10 years, maybe child Okay, suffering something is from diabetes. triggering. Yeah, yeah, Okay, so exactly, something exactly. is triggering the body of the child Yeah, to not produce
insulin, or maybe produce defective insulin. So Yeah, that is affecting the child, right? yes, Okay, so what are exactly. the symptoms? I mean, if I'm a parent and if I have a child, how will I know that the child is suffering from diabetes, Yeah, type 1 ex- diabetes? exactly. Madhuri says one sentence is very important. When a Hmm. child becoming type 1 diabetes, then can't be Hmm. remain asymptomatic. Can't be Okay. remain asymptomatic. There must be Okay. So some symptoms will symptoms. Yeah, definitely come. yeah, exactly. Because Okay. child suffering from in a day hypoglycemia and also hyperglycemia. As for example, child Acha. has a blood sugar 100 blood sugar in a day, and variation rising up to Mm-hmm. the 800 mg blood sugar per day, right? This is a big variation. So Oh, child may have yes. episodes of the hypoglycemia also, and episodes of hyperglycemia also. Then carrying to the doctor, and doctor investigate all the things, and saying that the child is a type 1 diabetes, right? And many Okay. So the blood other, sugar levels yeah, will vary. Yeah. yeah, Mm-hmm. exactly. A Mm-hmm. child may not be remaining asymptomatic when becoming type 1. And maybe some children are frequent urination and frequent Okay. just abnormal symptoms developing. They are eating, but their cells can't get a proper energy. So that the weight Okay. reduction always there. So So that many other symptoms also, right? so the breakdown of food is not happening properly. So yeah, maybe it will affect their Yeah, energy levels, yeah, and it will exactly. also affect their urination Yeah, normal yeah, process. yeah, Okay. exactly. Okay. Yeah. Yeah. So I would like to tell our viewers that as per data from International Diabetes Federation, globally there are 4.6 billion children and adolescents under the age of 20 who suffer from type 1 diabetes. So this is a very big number, and more shocking is that India is having the highest number Yeah, of cases, followed only by USA and Brazil. yeah, yeah. So this is something that we really need to look at, and address this issue as soon as possible. So Dr. Joshi, we all know that you've done this self-driven, very innovative car-driven campaign, and you've been so passionate to create awareness about this disease. So we would like to know that what led you to dedicate your time and resources to spread awareness about this debilitating disease. Yeah, yeah. Madhuri, once in our hospital, one mother, Mm-hmm. उनकी 4 साल की बेटी को इंसुलिन का इंजेक्शन दे रही थी, Okay. राइट? तो देन मैं और मेरी सिस्टर वहां से पास हुए, हमारी ऑफिस से निकले, पास हुए, तो वो Right. मदर मदर की आंखों में आंसू थे। तो वो मुझे Hmm. बोली कि मैडम देखो, मैं अपनी लाइफ में एक भी बार इंजेक्शन नहीं ले पा रही हूँ। मैं Hmm. नहीं ले, मैंने लिया भी नहीं है, और मैं ले भी नहीं पा रही हूँ। और मेरी Not ये जो, required. Hmm. या, और मेरी जो 4 साल की डॉटर है, उनको मुझे दिन में 4 बार उनका ब्लड शुगर मेजर करने के लिए मुझे उनका खून निकालना पड़ता है, प्रिक कर, नीडल से सोई से प्रिक करना पड़ता है। और दिन में Hmm. 4 से 5 बार मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन मेरी बच्ची को, 4 साल की बच्ची को मुझे देने पड़ते हैं, Every day. एवरी डे, एवरी डे। Oh, oh. तो वो माधुरी, वो वेरी हार्ट टचिंग सेंटेंसेस, वो 4 साल की लड़की बच्ची बोली कि माँ, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि ये सोई, ये नीडल मुझे दर्द नहीं करती है, आप रोती हो, वो मुझे पसंद नहीं है। उनके आंसू पोंछने लगी, आप माँ रो मत, मुझे ये नीडल नहीं दुखती है, मुझे कुछ नहीं होता है। वो 4 साल की बच्ची के जो 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 उनके वर्ड से हमारे हार्ट में बहुत डीपली इम्पैक्ट कर गए। और फिर Right. हमने सर्च मिशन शुरू किया, माधुरी की, कितने थोड़े 2-5 बच्चे होंगे हमारे एरिया में, हम चलो उनको हेल्प करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हमारे सर्च मिशन में बहुत सारे बच्चे पाए, ऐसे बच्चे, Hmm. और उनकी जो मिजरेबल कंडीशन थी माधुरी, कि उनका जो हमने HbA1c करवाया रिपोर्ट, तो वी आर गेटिंग वेरी शॉकिंग रिजल्ट्स। जो बिलो 6.57, बिलो 7 होने चाहिए, 6.5 बिलो होने चाहिए, रीचिंग अप टू द 17, 13, 14, 16, 17। यानी ये बच्चों को तो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका बहुत रहता होगा, राइजन। और उनके 2 साल में तो उनको ब्लाइंडनेस आ सकता है, 2 साल में उनकी किडनी फेल हो सकती है, 2 साल में उनके हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 17 HbA1c इज अ वेरी शॉकिंग रिजल्ट। सो Yeah. या हमें ये मिशन, हमने लगा कि नहीं, ये मिशन मोड पे आना चाहिए ये बात। Hmm. So Mhm. on that day, me and
and my sister and our children, Dr. Raja Joshi and Dr. Man Poncholi also joined with us, and we did a Kashmir to Kanyakumari self-driving awareness campaign, and in USA also self-driving San Francisco to Atlanta 4,000 किलोमीटर अवेयरनेस. लेकिन एक हमें बहुत शॉकिंग हमें मिला हर जगह पे, कश्मीर टू कन्याकुमारी, एवरीबडी आस्किंग अस माधुरी की हम लोग मैडम पहली बार जानते हैं कि बच्चे को भी डायबिटीज हो सकता है. सबको एक रॉन्ग बिलीफ है बाकी डायबिटीज यानी कि ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 50, आफ्टर 60, आफ्टर 70 इयर्स ऑफ एज. ये रॉन्ग बिलीफ है, ये बच्चे को होता है. किसी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने यही क्वेश्चन पूछा कि हमें आज तक नहीं पता था कि, और ये भी नहीं पता कि ये बच्चों को 4 से 5 साल इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, 4 से 5 बार ब्लड शुगर मेजर करना पड़ता है, इतनी बार उनको नीडल प्रिक होना पड़ता है. किसी को नहीं पता है माधुरी. ये बहुत very sad, yeah. And after 100 years of insulin discovery, और वो भी एक बच्चे पे हुआ था, जुवेनाइल नया नहीं है, 100 साल हो गए, राइट. और this scenario at grassroots level, at rural level, so we have to this is definitely the need of the hour, that urgent attention is given to this subject. So this also brings me to my next question, that like you mentioned, it can lead to blindness, it can lead to kidney failure. So what is the ultimate, what happens ultimately to the child? मैंने पहले भी बताया माधुरी की ये जो टाइप 1 डायबिटीज बच्चे हैं उनका प्रॉपर साइंटिफिक प्रोटोकॉल से मैनेजमेंट किया जाए तो ये बच्चे अदर बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. ये बच्चे ये क्योंकि अभी इंडिया में ये बच्चों का लाइफ स्पैन सब इंटरनेशनल और नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट के उनके मंतव्य से बिलो 25 इयर्स है, due to fatal diabetes complications. क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी रिमोट एरियाज में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनको भी डूज एंड डोंट्स पता नहीं है. उनको भी क्योंकि ये इंजेक्शन पेरेंट्स को देने पड़ते हैं, गार्डियन को देने पड़ते हैं. उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है कि हाउ टू इंजेक्ट द इंसुलिन, तो वो एक ही जगह पे इंसुलिन देते हैं. तो पूरा आप देखें ना बच्चों का जो साइट है इंसुलिन इंजेक्शन का, तो वहां एब्सेस हो गए हैं क्योंकि वो एक ही नीडल यूज करते हैं. इकोनॉमिकल बर्डन है, तो काफी ऐसी चीजें हैं. तो वो एक अवेयरनेस प्रोटोकॉल, साइंटिफिक प्रोटोकॉल का अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से बच्चे फैटल कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं और उनका मोर्टालिटी रेट अपने इंडिया में ज्यादा है. We also have the highest caseload, and the mortality rate is also very high. Exactly. So Dr. Joshi, if a child is suffering from diabetes, तो what is the current cost of therapy? मतलब कितना खर्चा करना पड़ेगा lifelong, जैसा आपने बताया, to Exactly. माधुरी अभी जो पेरेंट्स जो है तो खुद का वो अपने अकेले जो वो सब इंसुलिन इंजेक्शन, वो नीडल्स वो बाय करते हैं, वो सब कुछ वो कराते हैं, तो उनका पर मंथ का 10,000 का खर्चा होता है. और जो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो गुजरात में हमने जो सर्च मिशन से हमें 2,000 जैसे बच्चे मिले हैं, तो उन लोगों का जो क्या है कि पेरेंट्स और सब मिलके हम लोग और बल्क में जो वो होता है वो जो लेते हैं सब, तो उनका एक्सपेंस पर बच्चे को आता है 5,000. So 5,000 per this is the cost per month या per injection? ना per month cost उनको रहता है. और हम लोग हमारे एरिया के जो बच्चे हैं उन्होंने तो माधुरी यू फील सो हैप्पी टू हियर दिस कि हमने एडॉप्ट किए हैं सभी बच्चों को. तो उन लोगों को हम लोगों को ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. और कोविड पेंडेमिक में भी हम लोगों को टेंशन था कि पेरेंट्स को नहीं पता होगा, वो कोरोना की वजह से बाहर इंसुलिन और सब लेने नहीं जाएंगे, तो ये बच्चे को तो इनवेरिएबली डेथ होगा. तो हमने पर्सनली सभी बच्चों के पेरेंट्स को टेलीफोनिक कांटेक्ट करके जिन जिन को जो भी रिक्वायरमेंट थी, इंसुलिन का, स्ट्रिप्स का, कुछ भी रिक्वायरमेंट थी, हमने उन बच्चों को घर पे 2 साल तक कोविड में पहुंचाया, अवेलेबल करवाया. तो एग्जैक्टली वेरी नोबल ऑफ यू टू डू दिस. एंड एक्चुअली जैसा कि आपने बताया कि नॉट जस्ट इंसुलिन इंजेक्शन, फाइनेंशियल लोड भी पड़ रहा है पेरेंट्स पे, एंड मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो दे गेट वेरी क्रिपल्ड कि हम बच्चे को इंजेक्शंस लगा रहे हैं एवरी डे. सो दिस इज वेरी सैड.
and unfortunate, and most importantly they are not aware of the protocol कि या ये कैसे लगाना है, कैसे कितनी बार, कितनी कैसे ड्यूरेशन में लगाना है, if the health of the child is improving तो कितना हम कम भी कर सकते हैं, maybe या dosage. या So awareness I think is the मोस्ट supposed to be, इम्पोर्टेंट। yeah, most important here. अब So माधुरी, मैं so एक बात बताना yeah, चाहूंगी, जो sure. मदर्स है ना, मदर्स, ये बच्चों की मदर्स, वो टोटली, मैंने कितनी मदर्स को देखा वो डिप्रेशन की दवाई ले रही है, क्योंकि अच्छा, so दिन में 4 से 5 बार उनकी आंखों में से आंसू जाते हैं, वो 4 से 5 बार, तो वो डिप्रेशन की right. दवाई। और रात को कई मदर्स ऐसी है वो सो नहीं पाती, क्योंकि रात Hmm. में क्या है, बच्चों को हाइपोग्लाइसेमिक और वो एपिसोड्स आते हैं, तो मदर को Oh. ऐसा लगता है कि सुबह मेरा चाइल्ड लाइव होगा कि नहीं। रात को 3 से 4 बार जग के वो बच्चे को देखती है कि मेरा बच्चा जिंदा है कि नहीं। बहुत Hmm. मिजरेबल इमोशनल सिचुएशन भी, बर्डन भी बहुत Yes, है पेरेंट्स true. पे, राइट? Very, very true. So because you're in the USA and you've also, created awareness there, and this disease is like everywhere in across the world. So can you explain that how is the disease management in India different from how it is in outside India? And what can the Indian government do to support such patients and their families? माधुरी, मैं दो साइड में पहलू बताना चाहूंगी, जैसे कि सिक्के की दो दो पहलू होते हैं Right, सिक्के के, राइट? तो right. यूएसए में हाई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हाई Hmm, टेक्नोलॉजी, hmm. मतलब Yes. वो लोग क्या करते हैं कि इंसुलिन जो पंप है वो Hmm, टाइप 1 डायबिटीज वो उनको प्रॉपर एज में लगा लेते हैं। मतलब hmm. उन लोगों को दिन में 4 से 5 बार ब्लड ग्लूकोज मेजर नहीं करना पड़ता, नीडल से प्रिक नहीं करना पड़ता, वो Okay. सेंसर होता है, तो सेंसर की वजह से उनका जो मोबाइल ऐसे करते हैं यहाँ, तो वो पता चलता है कि मेरा ब्लड ग्लूकोज इतना है, सिर्फ मोबाइल Okay. ऐसे ही करना है, प्रिक नहीं करना पड़ता है। अच्छा. वो उनका हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे। दूसरा, उनके बॉडी को जितने इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इंसुलिन उनके वो सेंसर के वो काउंट करके वो इंड्यूस हो जाता है बॉडी में। मतलब Okay. इंसुलिन इंजेक्शन के लिए भी नीडल का प्रिक नहीं करना पड़ता बच्चे को। Okay, या okay. या और वो इतना सेंसर की वजह से जितना बॉडी को इंसुलिन चाहिए उतना रिलीज करता है, तो क्या वो है कि उनके, कैलकुलेट करके, ओके. या तो हम्म. उनका HbA1c भी कंट्रोल रहता है, जो टाइम इन रेंज बोलते हैं वो भी कंट्रोल रहता है, तो वो बच्चों को वो फैटल कॉम्प्लिकेशंस तक जाते ही नहीं है वो लोग। ओके. वो और दूसरी सिक्के की दूसरी पहलू भी है कि वो ये चीजें उनको इंश्योरेंस को उनको इनमें कवर होती है, इंश्योरेंस में, मतलब उनको, अच्छा. या वो बात है। और इंडिया में हमने जो बहुत एडवोकेसी किया सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और अपने स्टेट हेल्थ में, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है हमें, अपने ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से मनसुख भाई मंडाविया सर से, और गुजरात के अपने कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर श्री ऋषिकेश भाई पटेल सर से। तो वो लोग पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं ये बच्चे के लिए, और वो अच्छा. वर्ल्ड के लिए भी एक भारत विश्व गुरु की तरह होगा ये बात, क्योंकि ये सभी बच्चों को मैनेजमेंट में लेना, पूरा उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन देना, वो स्ट्रिप्स देना, उनका जो मैनेजमेंट करवाना टोटल साइंटिफिक प्रोटोकॉल से, ये पूरे, जैसे कि हमने कोविड में फ्री वैक्सीनेशन दिया, पूरी दुनिया देखती रह गई, राइट, ट्रू. ऐसे ही ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के लिए जो अपने वो इनिशिएटिव जो कदम भारत उठाएगा, तो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे भारत का ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। Very, very, very right. And this is wonderful कि ये already this has come under the attention of the या government. या And if we can work towards COVID awareness, and इतनी जल्दी लोगों को एक नए वायरस के बारे में जिसका सुना ही नहीं था किसी ने, if we can do that, then why not type 1 diabetes? Because this exactly, is the youth of the country, so youth of the definitely country, we need to save their lives. exactly. So any other innovative programs which you've executed, which maybe people can join your force and bring awareness about this disease? If you can just throw some light on that. या माधुरी, सी कि हमें पीपल से कनेक्ट होना है, हार्ट से कनेक्ट होता है विद इन मोमेंट्स, तो हमें ऐसा कुछ इनोवेटिव करना ही पड़ेगा, तो लोगों का अटेंशन हमें मिलेगा। तो हमारे गुजरात में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें हमने एक प्रोजेक्ट रखा, हमने पूरे गुजरात की 12 वीमेन डॉक्टर्स को हमने एकत्रित किया,
और Okay. हमने 2 कार ली, one driven by me and one driven by my sister Dr. Shukla Rawal. Okay. और Okay. यूज अ सरप्राइज, हमने नॉन स्टॉप गुजरात से दिल्ली तक का 16 आवर्स का हमने ड्राइव किया। और हमने रिजोल्यूशन, ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के लिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट को हमने रिजोल्यूशन दिया कि वी वीमेन डॉक्टर्स लाइक मदर ऑफ दिस किड्स। Right. Yeah, Very true. we would like to bring attention for each and every doctor and each and every people for type 1 diabetes. Then at the 6 o'clock in the morning, we reach at the Indian Medical Association headquarters, New Delhi, and in our surprise, each our national leaders coming with his family to welcome us, to encourage us, and they and all Gujarat doctors all the night sending messages that these women doctors by self-driving cars 16 hours non-stop, they are reaching or not, and for what cause they are doing this. So we So that represent, curiosity was there. exactly, Yeah. exactly. So much, so we should do some innovative to bring the attention from everybody, and Of course. yeah. The communication is very important, I think, and awareness, if it's created, then we can also control the caseload at the right time. And if you have access to good technology, then we can monitor it regularly, and of course save lives of these children. So we appreciate, we highly appreciate the efforts that you've put in to work on this mission. And we hope that this message reaches the government. It's already reached the government, but across the world we can Yeah, together do something to control the caseload. And we yeah, definitely exactly. don't want to be leaders here. Yeah, So we thank you for your time, and thank you for connecting with our viewers. Thank you so much. thank you so much.